Welcome for our present discussion, class 12 accountancy, part B syllabus we have started first, and in part B syllabus the 5th chapter we have started and going on with the activity ratio or the performance ratio or turnover ratio. In activity ratio, performance ratio or the turnover ratio, actually this type of the ratio is to be calculated to analyze the position of the company regarding the performance, regarding the activity of the employees of entire company. So under activity ratio there are 4 types of ratios. First, inventory turnover ratio we have calculated, and through inventory ratio average age of inventory also we have calculated. Then trade receivables turnover ratio, through trade receivable turnover ratio we have also calculated the average age of average collection period. Now the third type of activity ratio, that is the trade payables turnover ratio, I will discuss. After trade payable turnover ratio, the average payment period also will be calculated. Just look at the whiteboard. For ratio chapter, it is 18 number episode. Number 18 episode for accounting ratio chapter. This chapter belongs the 5th chapter. Activity ratio, inventory turnover ratio already discussed, previous episode. Trade receivables turnover ratio also previously discussed. And now our discussion topic is trade payables turnover ratio. Actually, trade payable includes creditors and bills payable. Trade payable, that is the creditors or the bills payable, forms from the credit purchase. अगर क्रेडिट परचेस किया तभी पैसा देने का बात आएगा, that is the current liability, then the creditors type of liability forms. And if the creditors will draw any bill on us, then we will accept that bill, and then bills payable forms. So bills payable and creditors, both the terms are under the trade payables, and bills payable and creditor forms from the credit purchase. So here in the formula we need the credit purchase, we need the creditors, we need the bills payable. Just look at the formula. Trade payables turnover ratio is equal to net credit purchase. There is a huge difference between the credit purchase and the net credit purchase. Credit purchase means the total amount of the goods are purchased on credit, and net credit purchase means total credit purchase minus purchase return. इसमें कैश परचेज का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कैश में जो परचेस किया वो तो कैश देके परचेस करके लाए, उसके साथ अमाउंट पेमेंट करने का कोई ताल्लुक नहीं है. तो ट्रेड पेबल्स का कोई बात नहीं है, क्रेडिटर्स का भी फॉर्म नहीं करता है, और बिल्स पेबल भी फॉर्म नहीं करता है. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल फॉर्म करता है, दैट इज ट्रेड पेबल फॉर्म करता है क्रेडिट परचेस से. लेकिन क्रेडिट परचेस करने के बाद भी तो परचेज रिटर्न हो सकता है, इसलिए परचेज रिटर्न को माइनस करके तब नेट क्रेडिट परचेज लिया जाता है फॉर्मूला में. तो फॉर्मूला क्या हो रहा है? नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स.
Average trade payables means average trade payables is equal to opening trade payable plus closing trade payable by 2. ओपनिंग ट्रेड पेबल दैट इज साल का शुरू में जो ट्रेड पेबल्स था वो अमाउंट, और साल का लास्ट में जो ट्रेड पेबल्स हैं वो अमाउंट, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज ट्रेड पेबल्स होगा। अभी ट्रेड पेबल्स मतलब क्या है? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। और जो बोल रहे थे कि एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना पड़ता है, यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू 365 days बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। वन थिंग यू कीप इन माइंड दैट if we cannot calculate the trade payables turnover ratio, then we can never calculate the average payment period, because trade payables turnover ratio is needed in the formula of average payment period. So on the basis of this formula, we have to calculate a sum. Here look, I have taken one sum. Credit purchase given, purchase return given, opening creditors given, closing creditors given, opening bills payable given, closing bills payable given. It is asked in the question, calculate trade payables turnover ratio and average payment period. So at first we have to calculate trade payables turnover ratio, then we will calculate average payment period. So what is the formula of trade payable turnover ratio? Net credit purchase by average trade payables. Now question is, credit purchase given, purchase return is also given. That means नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। सो क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न बाय एवरेज trade payable. Credit purchase is given 6,20,000. 6,20,000. 6,20,000 minus 20,000, because 20,000 is the purchase return by average trade payables. Separately, you can calculate average trade payables is equal to, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स बाय 2. ओपनिंग ट्रेड पेबल, again we know that the trade payable means the creditors and bills payable. Opening trade payable, that is opening creditors plus opening bills payable, that will be opening trade payable, and closing creditors plus closing bills payable will be the closing trade payable. इसका मतलब है opening creditors plus closing creditors plus opening bills payable plus closing bills payable by 2. ये करना पड़ेगा आपको. That is opening creditors plus closing creditors plus opening bills payable plus closing bills payable by 2. What are those amount? 1 lakh plus 1,40,000
plus 25,000 plus 35,000 by 2. That means 2,40,000 and 60, 3 lakhs by 2, that is 1,50,000. This is 1,50,000 is the average trade payables, average trade payables. So यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे थे एवरेज ट्रेड पेबल्स, ये एवरेज ट्रेड पेबल्स की जगह पे हम लोग को लिखना है 1,50,000. सो हाउ मच? 6 lakhs by 1,50,000. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जाए 60. So 4 times. That means answer आया trade payables turnover ratio is 4 times in this case. इसका मतलब क्या है? साल में 4 बार ट्रेड पेबल टर्नओवर होता है. ट्रेड पेबल मीन्स जो पैसा देना है वो 4 बार साल में पैसा दे पाते हैं कंपनी. 4 बार देते हैं मतलब एवरेजली कितना दिन के बाद दे सकता है कंपनी कैपेसिटी है वो अभी कैलकुलेट होगा एवरेज पेमेंट पीरियड के माध्यम से. तो यहाँ पे एक चीज़ और कैलकुलेट करना पड़ेगा. एवरेज पेमेंट पीरियड जो फॉर्मूला लिखाए थे आपको, एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू 365 डेज बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो. तो एवरेज पेमेंट पीरियड कितना आएगा? 365 डेज बाय, यहाँ पे क्या कैलकुलेट हुआ? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स. तो आएगा यहाँ पे 4 कैलकुलेट होगा. 4 9 36, 4 1 4, पॉइंट 4 2 8, 4 5 20, 91.25 days. That is 92 days you have to consider. ये 92 days का मतलब क्या हुआ? एवरेज पेमेंट पीरियड इज 92 days. That means averagely company is having the capability to pay the creditors, to pay to the creditors, to pay to the bills payable every after 92 days. Suppose previous year average payment period था 80 days, उसका previous year average payment period था 60 days, उसका previous year average payment period था 40 days. This year average payment period is 92 days. तो इससे एक चीज निकल के आ रहे एनालिसिस करते हुए कि कंपनी का कंडीशन दिन पे दिन खराब की तरफ जा रहे. क्यों? क्योंकि कंपनी पेमेंट करने का जो मैटर है, क्रेडिट में परचेस करने के बाद पेमेंट करने का मैटर में लेट करते जा रहे हैं. क्योंकि कंपनी के पास हो सकता है कि सफिशिएंट कैश ना हो, कंपनी के पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस ना हो, कंपनी चुका नहीं पा रहे या चुकाने में लेट कर रहा है. इसका मतलब इन फ्यूचर द कंपनी कैनॉट गेट द credit facilities from the suppliers of the goods. So the financial management of the company has to take some proper step in the next year, that within very short time, within very short days, how the company can redeem the amount of the creditors and the bills payable, so that the company can get the credit facilities in future. That's why trade payables turnover ratio and average payment period is calculated for the analysis of financial statement. Okay, so on the basis of this formula, you calculate the sums. You do the sums from the illustration and practical for trade payables turnover ratio and average payment period. Thank you very much.